Nalini, to you first. Take us through what could be possibly the submissions before the Supreme Court of India today. Well, Sneha, before that, just to get you a short update, Justice Chandrachud and Justice P.S. Narasimha, who were till now conducting the normal bench hearings, have now risen from the normal bench, which means that the special bench that is going to be hearing the Gyanvapi Mosque is expected to assemble any moment now. This is going to be a 3-judge bench, including Justice Suryakant, along with Justice Chandrachud as well as Justice P.S. Narasimha. So soon we can expect for the bench to assemble and for the hearing to begin before the Supreme Court. And regarding what is expected today, well, Sneha, there's a lot that's expected today, not only in terms of the arguments that are going to happen before the Supreme Court in this issue, but also what the Supreme Court is going to decide on it by the end of the day. I think the hearing is expected to last at least 1 hour. It might last longer, depending on what the course of arguments is going to happen. But the main thing to watch out for is not only what the Hindu side is going to argue on the aspect of the proceedings that are going on before the Varanasi court, but also what the state of government of UP will say. Because the last time around when the matter had come up, Solicitor General Tushar Mehta, who is representing the UP government, had specifically said that he had not got the papers for the case yet, which is why he could not place the government stand. But the papers were subsequently supplied to him. And today we also expect to hear for the first time the UP government stand on this. And the reason why that's going to be crucial, Sneha, is because Justice Chandrachud in the first hearing had said that they want assistance from the government to help them understand how to proceed with this entire case. So it is likely that the bench might be relying a lot on the stand that is going to be taken by the UP government in the matter, which is why it's going to be a very important takeaway. The second most important thing that is expected, like I was telling Gaurav earlier, is as to whether or not the stay that was imposed on the proceedings in the Varanasi court, although only for 1 day, whether that stay is going to be extended further or not. Because that is what the case of the Muslim side before the Supreme Court is, that the proceedings going on before the Varanasi court are happening without jurisdiction and that those proceedings should not be allowed to continue. So as to whether or not the Supreme Court will agree with that now that they are hearing the matter, or will they allow for the proceedings to go on parallelly, is going to be another important thing to watch out for, because that is eventually what is going to determine how this case is going to pan out, whether there'll be parallel hearings, because that is also a matter pending before the Allahabad High Court. So whether the Supreme Court will put a stay on all the hearings. I'm going to go across straight to Gaurav Sawant, who's driving along. नमाज पढ़ते हैं वैसी नमाज हुई, हम लोगों की नमाज जैसे हर जुम्मा हम लोग अदा करते हैं उसी तरह से हुई। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हुई पानी को लेके, वजू खाने को लेके, जो हमें सरकार से मतलब कि अदालत से ये है कि जल्द से जल्द हमें अस्थायी कोई वजू खाना बना दिया जाए कि जो नमाजियों को दिक्कत, 5 टाइम की जो आते हैं 100 लोग 50 लोग आते हैं उनको दिक्कतें ना हो। यहाँ आज जो समस्या हुई नमाज को लेकर, किस तरह की समस्या आपको हुई? देखिए, पहली बात कि जितने भी लोगों को आने के लिए रोका जा रहा है, लोग मैदानी चौराहे से लोगों को रोक दिया गया और प्रशासन ये रोकने का काम कर रही है और बिल्कुल न्यायालय के खिलाफ प्रशासन काम कर रही है। न्यायालय के खिलाफ कैसे था प्रशासन? भाई, न्यायालय में मस्जिद पे आने के लिए कोई रोक नहीं था, तो आप प्रशासन क्यों रोक रहे थे न्यायालय में? ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी 11 बजे इसे रोका जा रहा है। 11 बजे क्या मस्जिद बंद हो गई? तो फिर कितने लोग, इतने लोग कैसे आए? फिर भाई आए तो उन्हें रोका जा रहा है, गलियों से लोग आए वो आए, लेकिन जो हम लोग मैदानी से मैं पैदल आ रहा, बिल्कुल गलत बात है ये। नहीं, तो आप क्या 5 बार आते हैं और 7 दिन आते हैं? जी, हम लोग हमेशा आते हैं। तो अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि प्रशासन क्या करेगी, हमें न्यायालय से मतलब है और मुझे सुप्रीम कोर्ट का न्याय पे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी बिल्कुल सही करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि 1991 जो एक्ट था उस एक्ट के खिलाफ हो गई। आज जो ये वाराणसी न्यायालय ने जो जजमेंट दिया, बिल्कुल वो गलत जजमेंट है। तो ये 1991 एक्ट आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये करते हैं कि बिल्कुल इसको निरस्त कर देना चाहिए, ये जो याचिका है बिल्कुल इसको निरस्त कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि उनका वहाँ शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। शिवलिंग अगर वो है तो जो अभी यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे क्या था? या तो वो गलत है या तो ये गलत है, दोनों में से कौन सही है? जहाँ ये मान लीजिए वजू खाना गलत है या वो गलत है, कौन सा सही है ये आप पहले बताइए। ठीक नहीं, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है आप लोग की दृष्टि में? इसका सोल्यूशन हमने बाबरी मस्जिद दिया सोल्यूशन में, अब मैं मस्जिद नहीं दे सकता। सोल्यूशन में एक बाबरी मस्जिद दिया हूँ, भाई न्यायालय जो करेगी मैं उसे मानूंगा।